is implicit typecasting. Okay, in implicit typecasting we can convert the data from one type to another type directly. Now see, let's say I am writing here character n equal to say 70. Character n equal to 70. As you know, this treat as ASCII code, but I want to convert it into int. Int p1 equal to so this is bracket in bracket int of n. Now p1 value is not treat as character. It will print as p1. Hela. How mu likhi pari p1 equal to p1 plus 500 150 jaha bhi value dei. So now it is converted into character. Now coming to one more alternate. Hela. Convert character into character. See, I have initialized a equal to say 75. Okay, and character s equal to I have changed into character of a, means it is changed to this int value changes to character. This is converted into character type. Hello? Now convert integer to string. किए कही पारे काली कही int a1 equal to एती value. So string r equal to किए कही पारियो string dot value of a1. Integer dot pass into to convert from string to integer. It is to convert from integer to string dot value of. So string is a predefined class and having so many methods. String class रे बहुत गुड़े methods अच्छी है. Now say to convert there is a value is float in float. Okay, convert float to string, right? So I am writing float r equal to, okay, float r equal to 34.34 happy. Okay, now string take r1 r2 equal to string dot value of o capital, okay, r1. So these all will be converted directly. So to convert any value into string, we can use string dot value of. Okay. So you got here clear point. To convert any type of value into string, we can convert string dot value of. To convert from string to other, we need these all different type of typecasting process. These are called explicit typecasting. We use integer dot parse int, float dot parse float, double dot parse double. Okay, and for character no need any typecasting because it converted directly. Okay, so this is about the typecasting. And what are the more detailed things are there, I will send through the material for you people. Okay, so now we will go for next lesson. Are working at a binary level. First we have to know what is binary level. Binary number, number 2 octal number, and number 3 hexadecimal number. Okay, the binary numbers are the numbers that represent only 0 and 1. 0 and 1. Binary means having 2 digits, having only 2 digits. Okay, now coming to the octal number. The octal numbers present from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 8 digits. कौन प्रॉब्लम अच्छी चल ठीक है
8 digits. Now coming to the hexadecimal number. The hexadecimal number present from 1 0 1 2 3 4 5 6. For 10 it is represented by A, then B, then C, D, E and F. F for 15. So total 16 digits. Okay, these are the binary, octal and hexadecimal number. जदि कार आइडिया नहीं तबे कुह मु एक्सप्लेन करी, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू टू नेक्स्ट. जदि कार ए भीतर आइडिया नहीं कुह मु एक्सप्लेन करी बाइनरी, ऑक्टाल, हेक्साडेसिमल. जदि समस्ते जानिच ताहेले मु कन्वर्सन अछि, कन्वर्सन प्रोसेस बाइनरी टू ऑक्टाल, ऑक्टाल टू हेक्साडेसिमल जानिया कथा. ठीक अछि. इफ यू हैव अ डाउट then you send me personally also, I will clear your doubts, otherwise you will discuss on Sunday. Now coming to say I am putting these all in comment, backslash star and star backslash. Hala. Now these are the comment, treated as a comment. Now I am writing. So what are the operators? Bitwise operators are binary. These operators are working at a binary level. Keep it in mind, these operators work at a binary level. Binary level means only 0 and 1, nothing else. Octal, hexadecimal numbers, it will work only at a binary level, only 0 and 1. So what are the operators? The operators are AND, bitwise AND, this is bitwise AND, bitwise OR, bitwise NOT, okay, AND or NOT, and left shift, right shift, left shift equal to, right shift equal to, huh? नहीं, double equal to not equal to in a relational operator. Hala, and or not, AT. So these are the bitwise operators working at a binary level. Now how these are working at binary level? See, int A equal to I am writing 5. int B equal to I am writing 7. int C equal to A and B. What is the result? What is the result of C? Println C. What is the result of C? Dekho. Now I am explaining how it works. Okay. So coming to, so what is the binary equivalent of A? 5. What is the binary equivalent of 5? 5 equal to 101. Okay. And 7 equal to 111. This is binary equivalent. Hala. So किए बुझी पान न बोले प्लीज आस्क बुझे दिबे एटा नाही जदी आगु चली. Okay, so binary number 5 को डिवाइड करो 2 रे 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1 पुनी 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0. So value is 101. This is for 5. Similarly for 7, find the remainder 2 3 ja 6, remainder 1, again 2 1 ja 2, remainder 1. So 1 1 1. हला आरे गोटे आउटे टेक्निक भी अच्छी. से टेक्निकटा कहूची किन फटाफट बाइनरी नंबर रे कन्वर्ट करि पारियो. सो टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट लिखी दूची 128 हाँ 16 ताबरे 4 ताबरे 2 1 है but 2 to power 0. This is nothing but 2 to power 0. This is 2 to power 1. This is 2 to power 2. This is 2 to power 3. This is 2 to power 4 5 6 7. 2 to power 7 equal to 128. मनगर I want to represent 5. I want to represent 5. 5 माने 4 रे गुटे पक आ 1 रे गुटे पक मझी रे 0 बगै दियो.
So 101 we are getting 5 है to get 7 7 हेले हमर 8 टू कम अछि so 4 plus 2 6 plus 1 7 we are getting 7 मन कर कहि मु 13 13 रो बाइनरी इक्विवेलेंट केते 13 रो बाइनरी इक्विवेलेंट माने 13 माने 16 रो कम अछि so 8 okay continue yes, so to find 13 13's binary equivalent 8 plus 4 12 plus 1 13 our remain is 0 so 1 1 yes, 0 1 in this way we can calculate the binary equivalent बुझी पाटिन बोले केते रे गोटे नेले 8 गोटे नेले 4 माने 13 minus 8 आउ केते रहला 5 5 रहला आउ गोटे 4 आउ गोटे 1 ए मिसोनो 8 plus 4 केते 12 12 plus 1 13 हला आउ गोटे एग्जांपल नबा मन कर मु नेबी 9 नेबी 9 9 बोले कोन हबरे 8 रे गोटे 1 जीवो आ 1 रे गोटे 1 जीवो 8 plus 1 9 आ कोन हबो दीटा 0 0 so like this way we can calculate the binary equivalent by using this technique हला ना इडा बुझी पालनु को हरमेश 1 2 16 13 बुझुल तो इडा हेले जो फर्स्ट टाइम जो वैल्यू जगह सीधा 2 रे डिवाइड करी कर जाउ छे 2 रे डिवाइड करी जाउ छे माने लास्ट वैल्यू एमिदी जाउ छे लास्ट 2 टू पावर 0 2 टू पावर 1 2 टू पावर 2 ए फॉर्मेट रे जाउ छे हला so now find AND operator how the AND operator work the AND operator work like as you have learned in previously so 1 and 1 equal to 1 आउ सब 0 0 1 0 0 1 0 0 and 0 0 0 and 0 equal to 0 if all values are true then true I am करथिले so if all 1 then it is 1 now find its 5 and 7 5 7 1 1 1 एटा 0 एटा 1 so that is equivalent to 5 that is equivalent to 5 how example नहीं बुझुती देखो let's say I have given 1 0 1 0 1 1 हला मोरे वैल्यू डा नेली how would I नेली ना 1 1 0 0 1 0 find AND operator 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 so 1 1 1 देखो एडी गोटे जिंस ऑब्जर्व करो एडा गोटे वैल्यू डी नेली ए एडा गोटे वैल्यू नेली बी रिजल्ट कार आउची देखिलो बी रो ना 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 हला so now check it now print the value of c compile कर दवा एटा को execute कर दवा एरर अछि कि नो एरर right now no need to pass any parameter we are getting result 5 we are getting result 5 because a and b आम जिमिति चेक करथिले इठी रिजल्ट चेक करथिले 1 0 1 1 1 1 so result is 5 that is bitwise operator clear now coming to OR operator coming to OR bitwise OR कहूची कोन ना 1 1 1 हला एडा होची OR 1 1 1 आउ कोन ना 0 1 1 1 0 1 आउ 0 0 0 आर उल्टाडा if both values are 0 then only it returns 0 otherwise it 1 hela see let's say I'm writing a equal to 1 0 1 1 b equal to I'm writing 1 1 0 1 so what is the result so 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 बुझी पाल ओके
सो 1010 वैल्यू केतेटा पके देखिया एला 1 2 4 8 8 2 10 11 आर वैल्यू है 11 आर वैल्यू केते 1 2 4 8 एला 8 4 12 केते 13 आंसर आउला केते 15 हा 11 गुडे 13 गुडे पके हां हला एर वैल्यू पके 11 आर वैल्यू पके 13 सो आंसर आनिया और रे 15 और so answer is 15 okay this is called bitwise or bitwise not कोन ना not a एर जहा अछि not कले not a और कोन माने किमिनि हला देखो मु देइथिली वैल्यू केते एर वैल्यू 11 आंसर आइला केते आंसर आइला -12 हला मन कर मु देबी 5 not 5 equal to answer केते ना -6 means all these values will be changes into not form right 1 जगह 0 0 जगह 1 देखो केमिति होची कोन होची देखो ना 5 माने केते 101 5 means 101 101 हला ना बट हम जे को नॉट ऑपरेटर पके देले सी कोन हला 0 1 0 बट 0 1 0 बोल तो एटा आंसर हला 2 बट ये कोन करछि 4 डिजिट ऑल द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन 4 डिजिट सो सेहि पई ता जगह सी पके दोछि 1 आउ सी 1 दा पके लागी सी कर दोछि 12 हला -12 दैट कमिंग टू द -12 हला so -12 काई हला ना इंस्टेड ऑफ दिस 0 इट चेंजेस टू 1 एंड so लास्ट तार लास्ट मोस्ट बिट रे जदी 1 रिप्लेस हला माने से वैल्यूटा माइनस होबो तमे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पाठ रे इटा पढियो हला ओके so like this is a this operator is work as a not and now coming to the shift left रो टिके टेक्निक सुनो भलो भाबरे मन देकी सुनो 101 सो देखो 1010 हेले तो वैल्यूज आर एडा होची ए जो मु सिंबल ला बुझे देली एडा लेफ्ट शिफ्ट रो सिंबल ठीक अछि बट मु तुम आंसर टा कह देली आउटपुट हां सो कोन हबो ना ये जो मेमोरी रे रहिबो वैल्यूटा ऑल द वैल्यू विल बी शिफ्टेड टू लेफ्ट देखो के शिफ्ट होची नाउ 1 2 3 4 5 6 एमडी केते ना जार 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 32 टा सेल रहइबो जार 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 64 टा सेल रहइबो हेले हमर वैल्यूडा थिला एडा हेले एटू कोन हला ना ईच सेल इज शिफ्टेड टू लेफ्ट वैल्यू कोडी मेमोरी रे कोन थिला जे मेमोरी थिला 1 0 1 0 1 थिला वैल्यू कोन कहले हमें ना शिफ्टेड टू लेफ्ट means this will be shifted to the cell पछगु 1 this value is what is this value एडी हम लिखिया 1 तापर लिखिया एडी 0 आउ धरे लिखिया 1 ए लिखिया आउ धरे 0 ए लिखिया 1 आउ दीटा सेल खाली रहला because two cells are shifted to left so next two value is 0 and 0 एमनी हला दीटा value so new value is this one एडा हला new value देखो आर वैल्यूडा देखो एबे 0 1 एडा हला 1 2 एडा हला 4 हला ना आर वैल्यूडा बाहर करछि 1 2 4 8 16 आर वैल्यूडा केते 16 हां तब 32 तब 64 मिसे दियो ती सब 64 प्लस 16 प्लस 4 केता आइला रे 84 आइला आंसर इज 84 यस सो दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग हियर हला after left shift we are getting result 84 okay see I have given some binary number value like 1 0 1 1 0 this much this is my binary number value given to the computer for processing now left shift 3 means kona na all the value will be shifted towards the left 3 cell means new memory cell केता होबो ना coming to new memory in new memory पुणी वैल्यू जगह ड्रा करो सेल
1 2 3 4 5 6 7 8 एमती चलती केते गुड़िए सो 3टा सेल लेफ्ट को होची माने कौन हम ना ये 3टा जीरो मिसी जीव आउ सब वैल्यू जाक कौन हम पछू पड़े दैट इज 0 1 1 0 1 means each value will be shifted to the left three most cell because we are shifting all the value to the 3 cell so this value will be moved to कुड़ी जीव ए वैल्यूटा जीव एडी 3 नंबर सेल को हाँ एडी जीव 1 को तापर कौन जीव 0 ए वैल्यूटा एडी गला तापर ए वैल्यूटा कुड़ी जीव एडी जीव 1 सिमिलरली एमनी शिफ्ट हे गला रो 3टा 0 लास्ट रे पड़ियो हला नाउ कैलकुलेट दिस वैल्यू आर वैल्यू केते होची रे 1 2 4 8 6 हला 1 2 4 8 16 16 आउड हला 32 हला 16 32 64 128 128 ए सब जा मिसेले जहां सी रिजल्ट हला सो लाइक दिस इट विल बी कैलकुलेट हां इडा कहली लॉजिकडा ए लॉजिकडा हम कहिथिली 1 2 4 8 16 32 64 128 अरे वैल्यूटा केमसे बाहरला कहिथिली ना आउदर कहबी ना बुझिला ओके सर देखो एनी नंबर 2 टू पावर 0 इक्वल टू केते सर गोटरा कहि 1 2 टू पावर 1 इक्वल टू केते 2 2 टू पावर लेफ्ट शिफ्ट हमें 3 करि परिया एग्जैक्टली सेम वे वी कैन यूज राइट शिफ्ट आल्सो राइट शिफ्ट रे कोन होबो देखो इफ वी विल यूज राइट शिफ्ट देखो ओ आई वांट टू यूज दिस वैल्यू एज ए राइट शिफ्ट रे मेमोरी रे 0 ऐड होबनी कोन होबो ना मेमोरी रू 0 रिमूव हि जो माने करो राइट शिफ्ट 2 कली राइट शिफ्ट 2 means these two values are removed from the memory and remain only 101 हला एटा केते वैल्यू रे 1 2 ना ना एटा केते 1 1 2 2 4 4 8 16 16 plus 8 plus 4 1 2 4 एटा 2 एटा ला 4 एटा ला 8 16 हरी हला हले 16 20 हां 22 को राइट शिफ्ट 2 करो 22 को राइट शिफ्ट 2 करो है ना नाउ रन दिस कोड वी आर गेटिंग 5 द रिजल्ट इज 5 हला सो मींस we able to understand this is 5 so we able to understand the value of a right shift means the value are removed from the memory hela similarly we can use left shift equal to right shift equal to ame short hand use करथिले short hand रो काम कोन थिला a equal to a plus 1 c आम लिखुथिले int p equal to 10 and p equal to p plus 10 p plus 20 so in this case I can write also p plus equal to 20 तार मीनिंग कोन p रो वैल्यू चेंज होची p रो वैल्यू जहां अछि सेइतरे मिस होची 20 p वैल्यू add with 20 that is called the short hand operators we have already discussed short hand कोइ ना नहीं plus equal to minus equal to कोइ हला so this is short hand exactly same way this will work so what we will write a greater than equal to 2 means the value of a is shifted to a right the value is left shift equal to 2 left shift equal to 2 माने a रो value permanently change हेला हमें आगुरु लिखिथिले कोन आगुरु लिखिथिले int c equal to a right shift 2 लिखिथिले आ c रो वैल्यू प्रिंट करथिले हमें कोन करले ना c रो वैल्यू दरकार वी वांट टू असाइन डायरेक्टली दिस इज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर
मु लिखी a इक्वल टू a राइट शिफ्ट जहाँ ए लाइन दा कोड लिखले ताहा एटा हमें a तो यूज करि पारे ना हमें b यूज करिया बा जदि a यूज करिया इनटू दरकार नहीं हला हला ए स्टेटमेंट लिखिले जहाँ आउ ए लाइन भी लिखिले ताहा दिस इज which operator shorthand operator both represent the same similarly we can use a right left shift 3 which is equivalent to equal to 3 which is equivalent to a equal to a left shift 3 same both line are same these all are the binary operators shorthand operators these all are the shorthand operators used for binary operation, right? So I hope that you are getting little bit knowledge.